Thank you for joining us on This is Exclusive. We are live from the newsroom in Bengaluru this evening, and our focus on top of the show will be on the dramatic pictures that came in from both Thailand and Myanmar this afternoon as an earthquake measuring 7.7 followed by an aftershock of 6.4 struck these countries. Aftershocks felt even in parts of India. Here are the headlines this evening. Quake measuring 7.7 hits Myanmar and Thai capital of Bangkok. Dramatic visuals capture high-rise skyscraper crumbling down in Bangkok. Emergency declared in Myanmar and also Thailand after massive earthquake. Prime Minister Modi offers relief and assistance. Rapist Punjab pastor Bajinder convicted in 2018 sexual assault case by a Punjab court. Bajinder Singh, would you respond? There are accusations against you by the father of Disha Salyan. You manipulated the Disha Salyan case. Complaint filed against him in the Disha Salyan case. The latest, Bajinder Singh running from Republic since 2020. Watch Bajinder run again. Major protests in Kathmandu. Monarchy supporters clashing with the police demanding restoration of the Hindu kingdom. Starting with the big story, ladies and gentlemen, of the earthquake in Thailand and Myanmar. We've been getting you live pictures and updates, and on the show, we will have a live report from Bangkok. But first up, the pictures that came in this afternoon. Some of the biggest buildings in Thailand and in its capital of Bangkok, with skyscrapers crumbling down, rooftop pools resembling waterfalls in Bangkok. These are the pictures that came in. A short report on the impact of the earthquake this afternoon, and then we have a live report. Panic and devastation unfolds as a powerful 7.7 magnitude earthquake strikes Myanmar, sending tremors as far as Bangkok. The region is in crisis, with collapsing buildings, mass evacuations, and emergency response teams racing against time. I thought I was fainting because everything suddenly shaking just a little bit, and then when you felt harder, and I was turning to my boss and I was like, do you feel the same thing? And she's like, yeah, I thought it was me. And then the light started to fall off the floor, the ground, and then we ran down to the building from 25th floor. The epicenter, located near Mandalay, Myanmar's second largest city, has led to widespread destruction. In Bangkok, emergency teams are working tirelessly to rescue those trapped under collapsed structures. Whereas a state of emergency has been declared in Myanmar. This earthquake was caused by movement along the Sagaing fault, one of the most active fault lines in Southeast Asia. Buildings have crumbled, lives have been lost, and many are feared to be homeless. Rescue teams are in a race against time. Ayan Chatterjee is joining us live from Bangkok on This is Exclusive this evening. Ayan Chatterjee is there. He was a witness to what happened earlier today. Ayan, what is the situation there in Bangkok? We saw some of the pictures come in also of the medical camps being set up in different parts of the city. Why don't you take us through what you saw first up
And secondly, the situation, the measures being taken by authorities there. Hi. So I want to tell you that what I have experienced, it was just like a nightmare. I was there in that area, very close to this building, when the building was getting collapsed. Like I was just stepped out from that other office building, and very recently we have heard some big noise. And this one, and the JJ Mall area, that got collapsed like within a second. You can see like how devastating it was. Like I can say that I have narrowly escaped the death. That I can say. And right now I'm here in my residential area. You can see the area is so quiet. It's so quiet. Usually it's not quiet. All the stores are closed. Most of the restaurants are closed here. People are in fear. People are afraid. People can't believe what they have felt. People can't believe what they have experienced today. So, what is the latest number? Because we don't have clarity, of course, it's too early. Yeah. Sorry, go ahead. Yes, please, that would be great, Ayan, if you can show us around. We'll stay full frame on your camera. Okay. Yes, please, go ahead. You can see the roads are very much empty, nothing, no movement. This is not the picture of Bangkok. Bangkok is vibrant, Bangkok is lively. This is a very good time when lots of tourists are coming to Bangkok. Songkran is here. But what happened today? I have seen few tourists from my building, they are leaving the apartment. They said that we are scared, we don't want to stay here. They're leaving these things. But one thing I would love to tell you that the way government has handled the situation is really, really appreciative. Very quickly, they came into the action. They took everything under control. Ayan, it's really nice. One request, Ayan, if you can keep the phone a little away from you so that we can see around you as well. It's a little close to you, so we can't see what's behind you. So, if you can just hold the phone a little away from yourself, your body, and then we'll be able to see around you. Yes. Yeah. Yes, please. This is better? Yeah. So this is the situation now. You can see. Yes, please, go ahead. Yeah. Everything is closed. Everything is closed. So I'm taking you to the area where I do stay. This tall building. You can see this is not a scene. This is not a picture what I have seen in the last 2 years. But people are still afraid. I spoke to a few of my neighbors. They were afraid. They were like, we can't believe what we have experienced. It was such a devastating thing. Like when I was crossing, like today afternoon, when I was showcasing the Ladistan hospital, it was pathetic. It was pathetic. We never thought to see this kind of sights here. See this road. See this road. Empty. And this is one of the touristic spot here. You can see. This is not a picture because during Songkran, we usually get to see lots of people are coming here. When it happened, these roads are busting, but now these roads are empty. a sense of panic there in Bangkok. Yeah, Ayan people are Chatterjee saying People are that panicking. he hasn't seen Bangkok this deserted, the streets of Bangkok being this deserted, right? Where were you, Ayan, when this happened this afternoon? Where were you? And tell us what you saw around you. Like around me, I am seeing all the restaurants are closed. This is central Bangkok, by the way. This is not the outskirts. This is central Bangkok. So I am taking you towards the apartment where I stay. No, where were you in the afternoon? Huh? When this happened, where were you? So when this thing happened, I was in the Chatuchak area. In the afternoon when the earthquake struck, where were you? Yes. So I was on the Surawong Road, Silom Surawong Road. So from where I took the view of the Ladsin hospital. So it was very scary one because the patients were so afraid to be inside the hospital. They were under treatment on the roadside, on both the roadside. The road, they have stopped the road, barricaded the road, and on the footpath,
they were treating the emergency patients. And after some time, then I saw few more ambulances came with new patients in a critical situation. Then we understood that these patients are from the sites. It was really, really horrible situation. What I have shown in the afternoon in Republic TV. Again, I'm telling you, this is the main. And is there an official number? Is there an official number about how many lives have been lost or the casualties, Ayan? So I got a picture of 2 people who passed away. I have shared this. Do you have any Republic details, TV Ayan, of the number of casualties? Yes. But I have heard there are 3 people who have passed away. People are still working to, find out how many bodies are there. They're still counting. We did not get any official figure from the government yet. Okay. And do you see medical camps? We saw pictures of a few medical camps. We saw pictures of medical camps being set up in different parts of Bangkok as well. The hospital, because people are afraid to stay inside any building. So they set up the camps outside and treating the patients outside. Any emergency patients coming from this kind of areas, they are treating outside. Those are not temporary camps. Those are the very much camps of the hospital. Just because patients are very much afraid. They are panicking. So they were treated outside. Now the situation has been changed. Now they have been taken back to the hospital again. But I want to tell you one thing. The way the hospital you can turn the camera to towards you now. Was really mind-blowing. Was really mind-blowing. Yes. Yeah. Okay. So Ayan Chatterjee right now is in the heart of central Bangkok. He's in central Bangkok and he says he hasn't seen central Bangkok this empty in the last few years that he has been living in Bangkok, saying it's never been this deserted. Also talking about the response of the medicos there who came out in large numbers and ensured that they were on site in all the affected regions. You saw the visual of the skyscraper crumbling. It was an under construction 30-story skyscraper that came crumbling down as a result of the earthquake. Measuring 7.7 was followed closely by a 6.4 aftershock. And those are some of the pictures on the road, just to give you an idea of the kind of impact that this quake had. Let's move on now. Thank you, Ayan, for joining us. We hope you're safe and you stay safe there in central Bangkok. Ayan Chatterjee joining us live on Republic. This is exclusive. The next story, ladies and gentlemen, here on Republic TV, we have been getting you the story of the rapist Punjab pastor. His name is Bajinder. He's a fraud and he's been cheating women, cheating people for many years now in Punjab. In the name of God, Bajinder has today been convicted in just one case that dates back to 2018 when he sexually assaulted a woman at her residence in Chandigarh. In that case, he's been held guilty. He was jailed today. Here's what happened. He claimed to quote-unquote heal people. For years, he staged mass events pretending to miraculously cure those suffering. And today, this sham of a preacher, Pastor Bajinder Singh, stands convicted in a 2018 rape case. The case dates back to 2018 when a woman from Zirakpur accused Pastor Bajinder Singh of sexual assault. And after evading the law for years, there is no escape now for the fraud pastor. Bajinder Singh, आप कुछ कहना चाहेंगे? Bajinder Singh, Bajinder Singh, आप कुछ कहना चाहेंगे? Bajinder Singh, आपको कोर्ट ने जो है वो गिल्टी करार दिया। Bajinder Singh, आपको कोर्ट ने गिल्टी करार दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम यहाँ पर बात करें, विंडो पेन गाड़ी के नीचे करें। Bajinder Singh, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको कोर्ट ने गिल्टी करार दिया 2018 रेप के मामले में।
The Mohali District Court is set to announce his sentence on April 1st. But this is only the tip of the iceberg. Republic TV's relentless campaign has put the spotlight on many testimonies. Shocking recollections that expose how this so-called preacher harassed innocent people and pushed others into the pits of exploitation. इतने एफआईआर को बीच निकल के इतने मेरे ऊपर हमले हुए, इतने मेरे ऊपर पर्चे दर्ज हुए, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मेरे ऊपर कॉम्प्रोमाइज का बहुत ज्यादा दबाव था। लेकिन आज मैं खुश हूँ, जज साहब ने जो भी फैसला किया है मैं बहुत खुश हूँ। और भी जिन लड़कियों के साथ हुआ है प्लीज बाहर आए, जो कपूरथला में भी हुआ है उसमें भी हम ऐसे ही जीत प्राप्त करेंगे। बजिंदर पास्टर जिसको अपने एक तरह से ऑफेंस जो उसने कमिट किया था उसकी सही से सजा मिल गई है, सुना दी गई है और क्वांटम के लिए जो है 1 तारीख रखी गई है। पर यह है कि मैं इसे उस लड़की की जिसके अगेंस्ट ये एट्रोसिटीज हुई थी उसकी 7 साल की लड़ाई की जीत मानता हूँ, उसके हौसले की, और उन लड़कियों की जो लड़कियां अपनी कभी आवाज नहीं उठा पाई, मैं उनके लिए भी ये मानता हूँ कि ये उनकी भी जीत है एक तरह से। And while this Bollywood-backed preacher may have been convicted now, the Bhagwant Mann government in Punjab has yet to break its silence on the matter. Who was shielding the pastor? Why was he not arrested earlier? And who was helping this fraud escape the law? And it's shameful that such a fraud, this fraud called Bajinder Singh, who faces multiple FIRs, ladies and gentlemen, not just one case, he faces multiple FIRs. Listen in to how politicians, Bollywood actors have backed him over the years. Take a look. Here's a video of Sidhu shouting Hallelujah with this fraud Punjab pastor. I'm being joined by one of the survivors' family members. I'm keeping her identity. I'm not naming her, but she's joining us on the show. I wouldn't like to address her by her name. नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज जो ऑर्डर आई है, इसको कन्विक्ट किया गया है। ये जो फ्रॉड है, जिसको आप प्रॉफिट बुलाते थे, बहुत सारे लोग उसको प्रॉफिट बुलाते थे, इस फ्रॉड को, पंजाब पास्टर को, बजिंदर को प्रॉफिट बुलाते थे। येसु येसु बाबा करके ये फ्रॉड करता था। तो आपको क्या लगता है आज? सर, मुझे यही लगता है कि देखिए, जो जिनके साथ भी गलत हुआ है उनको बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। और ये परमेश्वर के नेम पे जो ढोंग किया जा रहा है, जो भी परमेश्वर का नाम लेकर ये परमेश्वर की ही बदनामी कर रहा है, तो उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि अभी जैसे कुछ दिनों के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी लेडीज, जो भी लड़कियां वहां पे अंदर पीड़ित हैं, वो भी बाहर आए। अभी उनके पास मौका है, वो बाहर आकर अगर आवाज उठाएंगी तो गवर्नमेंट बिल्कुल उनको, पुलिस प्रशासन उनको बिल्कुल सपोर्ट करेगा और इसको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। और कितने लोग हैं, आपको क्या लगता है? और कितने लोग हैं? क्योंकि ये एक केस नहीं है। देखिए, आज जो इतने सारे लोग बाहर आके मीडिया से बात कर रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। एक एफआईआर नहीं, 2 एफआईआर नहीं, हमारे पास अभी आइडिया नहीं है कितने लोगों के साथ ये ऐसा किया है। बिल्कुल सर, मैं कहना चाहती हूँ कि अंदर ही कुछ लड़कियां और भी हैं
जो सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं आ रही है कि उनके पेरेंट्स के ऊपर जैसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, एक्सीडेंट करवाने की धमकी दी जाती है, क्योंकि हर बात पे धरने प्रदर्शन करने की वो बोलता है, समर्थकों को बुलाता है और मरवाने के लिए धमकियां देता है, जिसके बीच में इसने गुंडे भी बिठाए होते हैं कि अगर कोई इनमें से दिखे तो उनको मार दिया जाए। और इल्जाम क्या लगाएंगे कि इनके समर्थकों ने, जो इनसे प्रेम करते हैं, उन्होंने मार दिया, पर वो सब इसकी प्लानिंग होती है। अगर आज मौका मिला है तो उन लेडीज को, उन लड़कियों को जो छोटी उम्र की है वहां पे, उनको, जिनके साथ ये हो रहा है, उनको बाहर आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई कहते हैं ना कि अगर परमेश्वर की आड़ में, यानी कि वो बाइबल का मुखौटा पहन के अगर वो लोगों को, विश्वासियों को धोखा दे रहा है, जब तक मीडिया के सामने, जब तक लोगों के सामने नहीं आएगा, पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आएगा, तब तक उसे उस तरीके की सजा नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, जिनके साथ हो रहा है। अगर वो बाहर आएंगी तभी लोगों को पता लग पाएगा। आपके परिवार के साथ, आपके बहन के साथ क्या क्या हुआ था? हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताइए। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है ऐसे चीज़ों में बात करना पब्लिक में, लेकिन आपका जो मुश्किल, आपका जो डिफ़िकल्टीज़ है, आपका जो आपने जो झेला है इतने दिन, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता चले कि इसको जो बॉलीवुड का सपोर्ट था, पॉलिटिशियंस का सपोर्ट था, पता नहीं है क्या, इतना पावरफुल क्यों है ये आदमी, फ्रॉड, रेपिस्ट है ये। सर देखिए, ये सब पैसे का खेल होता है। इसके पास इतनी पावर आ चुकी है, इतना पैसा आ चुका है, ये किसी को भी परचेज कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। तो ये सिर्फ पैसे की ही धौंस पे होती है। जो चीजें होती है, सेलिब्रिटीज बुलाए जाते हैं, वो सब पैसे से आते हैं, वो कोई भी फ्री में नहीं आता है यहाँ पे। और अगर ये लोग बाहर आएंगे तभी इसे इन बातों की सजा दी जाएगी। इसके पास सपोर्ट किस चीज का? सिर्फ पैसे का। पैसे की पावर से ही ये हर चीज को करता है। अगर कोई गरीब है जो सपोर्ट इसको पैसे में नहीं कर सकता, तो उनको प्रार्थना के बेस पे बुलाया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एसएसपी ऑफिस के बाहर जो धरना हुआ है, उन लोगों को ये बोलकर बुलाया गया था कि आपके लिए प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना की जाएगी, आप जरूर आए। तो क्या था, उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। उनका विश्वास क्या, हमारी प्रार्थना होगी, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको धरनों में बिठाया जाएगा, उनका मिस यूज किया जाएगा। तो वो मिस यूज किया जा रहा है। लोग आते किसी और वजह से है और उनसे करवाया कुछ और जाता है। तो वो लोग तो अनजान है। जब तक ये सच्चाई उनके सामने नहीं आएगी, तब तक वो लोग कैसे विरोध में खड़े होंगे? जो अंदर है वो इनसे इतना डरते हैं, क्योंकि आपने उस वीडियो में देखा होगा कि कैसे उस बच्चे के साथ मार पिटाई की जा रही है। अगर ये ऐसे मार पिटाई करता रहा तो फिर तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएगा। अगर हम आज दो पीड़िताएं, तीन, पहले तीसरी थी, बट देखो अभी जैसे दो के केसेस स्टार्ट हुए हैं, अभी देखो आगे आगे कितना आएगा। क्योंकि अगर लोग इसकी, जो ये कर रहा है, उससे डरते रहेंगे, वो सामने ही नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ऐसे मारना, उसके बाद उसी लड़के का एकदम से बदल जाना, आप सोच सकते हैं कि वो बच्चा कितने प्रेशर में होगा जो इतनी मार खाने के बाद भी चुप है। हम नहीं जानते कि वो किस तरीके से का प्रेशर सह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ये झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली उन चीजों में नहीं फंसना चाहती, ना ही मीडिया के सामने आना चाहती है, ना ही वो इतने हाई लेवल के बंदे के साथ कोई भी पंगा लेना चाहेगी, क्योंकि पता है इसकी पावर के बारे में। निकलते ही ये इंसान कंप्लेंट्स करवाने लग जाता है। अभी जैसे जो अभी पीड़िता जिनको मारा गया वो बाहर आए हैं, तो उनके हस्बैंड पे भी ये कंप्लेंट करवा रहा है। मेरे हस्बैंड पे भी इन्होंने कंप्लेंट करवाई है, जो कि सिर्फ संडे के दिन जाते थे। उनको भी ये बोल रहा है कि पैसे लेकर भागे। या फिर जो हमारे साथ पास्टर निकले हैं, उन पे ये केस डाला जा रहा है कि वो उन्होंने मतलब छेड़छाड़ की है लड़कियों के साथ। ये सिर्फ इसके यही दाव पेच हैं कि अगर कोई इसकी मिनिस्ट्री से बाहर आना चाहेगा तो उसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाएंगे, उनको फंसाया जाएगा और झूठी एफआईआर्स करवाई जाएंगी, ताकि बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। प्रेशर, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और पुलिस प्रशासन को भी इनकी सुननी पड़ती है, क्योंकि ये धरने प्रदर्शन कर देता है, तो वो दबाव में होती है। इन चीजों को जैसे माहौल में अशांति का जो इन्वायरमेंट ये बना देता है, उसको शांत करने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट करता है। तो हम चाहते हैं कि लोग इनकी सपोर्ट में आए। जैसे जो भी वहां पे अंदर लड़कियां हैं वो बाहर आए, उनको सपोर्ट दी जा रही है। अभी बहुत सी जत्थेबंदियां हैं, बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया पूरा सपोर्ट कर रहा है इसको एक्सपोज करने में। तो मेरी गुजारिश है कि उन लड़कियों से भी जो वहां पे इतने दबाव में है, हमने देखा है वहां पे लड़कियों को रोते हुए,
जो लड़कियां बैग उठा उठा के वहां से ये भागी आपसे हैं, हम उनके एक्टिंग बारे में करवाता भी था जानते ये? हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिक्योर रहें। तो हम नहीं चाहते कि किसी की भी जान पे बात आए, क्योंकि ये इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसने नहीं, हमारी गाड़ियों के नंबर्स एक तक जो नोट वीडियो करवाए है, हुए हैं। जान से मारने के लिए इसने बहन जी, लोगों को बहन जी, भी एक वीडियो हायर है, किया हुआ है पैसे एक वीडियो है। हाँ जी, जी। एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है। यहाँ पे सिद्धू जैसे नेता वहाँ पे जाके उनके साथ स्टेज पे खड़े होके वो बोल रहे हैं कि उनके साथ बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया, उनको प्रॉफिट बुला के पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं उसको, प्रॉफिट ये वो, और पूरा एक्टिंग कर रहा है वो। आप सुन लीजिए इसको, या क्या ये सच है? मैं वो वीडियो को प्ले करना चाहता हूँ, देखिए अभी मैं प्ले कर रहा हूँ उस वीडियो को। धन्यवाद। हालेलुया 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 हाले बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये पैसे के लालच में बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे एक्टर्स उनके पास आते थे। कितना एक्टिंग करवाता था ये उनके ये जो लोग थे, आम आदमी थे, कितना एक्टिंग करवाता था उनसे ये फ्रॉड बजिंदर। सर वो तो पूरी देखो एक्टिंग ही होती है। पहले उन्हें बता दिया जाता है कि आपको ये स्टेज पे बोलना है। तो ये सब चीजें पहले, मतलब ये वाली जो सेलिब्रिटीज के साथ जो बात होती है ये तो पहले ही प्लान्ड होती है। उनसे बात की जाती है, इनकी डायरेक्टली बात होती है कि आपको किस तरीके से इस कार्यक्रम में योगदान देना है। तो ये सारी चीजें तो होती हैं इनके लिए, पहले से प्लान्ड होती हैं जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं। बहुत बहुत ये दुख होता है। और ये इनको एक्चुअली आज मैं आपको ये भी बोलता हूँ, और आपके साथ जो भी है उनको मैं सिर्फ एक चीज़ बोल के मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। कि लेकिन जो भी इनके साथ ये जो पॉलिटिशियंस है, जो एक्टर्स है, सेलिब्रिटीज़ है, जो इनके साथ स्टेज पे थे, उनको आज आप सबको पूछना चाहिए कि आपके सपोर्ट से ये इतना कर पाया था, इतना सपोर्ट ले पाया था। और एंड ऑल ऑफ देम शुड टुडे आंसर व्हाई दे सपोर्टेड दिस फ्रॉड रेपिस्ट, convicted of rape. Today he's been arrested. Pastor Bajinder, a fraud, got away because he had political support. That's it on This Is Exclusive. Thanks for watching.